Hello students, welcome back to my lectures of class 11 physics. We are studying our chapter motion in a plane. Here we are starting our another topic that is called as the circular motion. And here we'll talk about the different topics that are related with the circular motion. The first one is a very small topic, that is the angular displacement. Okay, first of all this circular motion, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था different types of motion के अंदर. हमारे पास सर्कल में दो तरह के मोशंस होते हैं. First one is the circular motion and second one is the rotational motion. What circular motion is? If a point object is moving in a circular path, then that is called as the circular motion. And what is rotational motion? If an object other than the point mass object is moving in a circular path, then that's a rotational motion. तो यहाँ पर डिफरेंस किसका है? सिर्फ ऑब्जेक्ट का. अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है तो सर्कुलर मोशन, अगर पॉइंट मास से अदर ऑब्जेक्ट है देन दैट्स अ रोटेशनल मोशन. लेकिन उनसे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं, दैट पैरामीटर्स विल नॉट change whether it's a point object or it's not a point object. Okay, so here the first one is the angular displacement. अब सबसे पहली बात यहाँ पर कि जो angular displacement है, it's a kind of axial vector. अब हमने स्टार्टिंग में axial vector पढ़ा था. Axial vectors are those vectors which represents rotational effect. यहाँ पर भी rotational effect आएगा, वहाँ पर जो vectors होंगे they are called as the axial vector. So here this angular displacement, ये कहीं ना कहीं हमारे पास rotational effect से डील करता है, and that's why this is a kind of axial vector. Okay, now what this angular displacement is? The angular displacement of the object moving around a circular path. Angular displacement सिर्फ circular motion के केस में ही होगा, circular या फिर rotational. Is defined as the angle traced out. आपने देखा यहाँ पर ये axial vector है, तो obvious सी बात है angle की बात करेंगे. Angle traced out by the radius vector. Circle में जो भी radius है, उसको हमने क्या बोल दिया? Radius vector. वो radius vector कितना angle trace करता है in the circular path in a given time. अब हमारे पास क्या है? Let us assume that we have an object which is moving in the anti-clockwise direction and we are considering some part of that motion that is from P to Q. अब जब ये ऑब्जेक्ट P से Q तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब यहाँ पर जो भी एंगल ये ट्रेस करता है इन दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Okay, and this angular displacement that is measured in radian. अब यहाँ पर है कि इस थीटा को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे. Here for circular motion we have a very important formula, that is theta is equals to arc upon radius. Arc क्या होगा यहाँ पर? From P to Q. Radius, जो रेडियस वेक्टर यहाँ पर हमारे पास एंगल बना रहा है, that is the angular displacement, and this theta is here. So here we have theta is equals to arc upon radius. I can write this theta is equals to arc PQ, and radius is this small r. So this theta is equals to PQ by r. By this formula we can find the angular displacement. Theta is equals to arc upon radius. Next is the direction. It's very important. We have seen that for any kind of axial vector, the direction is given by right hand rule. Now what this right hand thumb rule is? Here we have to use our right hand and we have to curl the fingers in the direction in which the object is moving. Suppose here if the object is moving in anti-clockwise direction, then in this case we have to curl the fingers in anti-clockwise direction in the same direction as the object is moving, and we have to curl the fingers. Then the thumb, in whatever the direction it points out, that is the direction of that axial vector. So here in this case it is perpendicular outwards. Okay, so अब यहाँ पर लिख सकते हैं its direction is perpendicular outwards. यहीं पर in the same diagram, if हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता, अगर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाता, तो एंगल तो थीटा सेम रहता, बट बिकॉज ऑफ दैट मोशन जो डायरेक्शन है उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो चेंज हो जाता. कैसे? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? विल अगेन यूज दैट राइट हैंड. राइट हैंड में क्या है? विल कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन इन विच द मोशन इज. अब यहाँ पर नीचे की तरफ है, हम इसको इस तरह से मूव नहीं कर सकते. देन व्हाट वी विल डू? वी विल change the direction of the hand, and that will be in the direction where it is easy to move the fingers. So यहाँ पर क्या? It is moving in this direction, so we will curl the fingers in the direction, and the direction in which the thumb points out, that will be the direction of that angular displacement. तो अगर यहाँ पर clockwise movement होता है, in that case the direction is perpendicular inwards. So this perpendicular outwards, it was for anti-clockwise, but for clockwise direction we have perpendicular inwards. मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो रहेगा तो परपेंडिकुलर ही, बट आइदर इट विल बी इनवर्ड्स और आउटवर्ड, दैट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट पार्टिकल और दैट ऑब्जेक्ट. सो हियर दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
you.